12th Maths 1, chapter number 5, exercise 5.4 from HSC textbook, page 179, question number 16. Now this exercise basically deals with the vector product. Vector product के ऊपर ये exercise deal करता है. It says find the direction ratios of a vector perpendicular to two lines whose direction ratios are. Okay. क्वेश्चन नंबर 16 में करो. सो यहाँ पर दो लाइन्स हैं, L1 एंड L2. ठीक है. L1 के डायरेक्शन रेशियोज दिया है -2, 1 एंड -1, और ये दिया है -3, 4, -3, -4, 1. These are the direction ratios of the two lines. इसको मैं बोलूँगा A1, B1, C1. This is the direction ratios. And A2, B2, C2. हमें वो लाइन चाहिए, लाइन L, जो इसको भी परपेंडिकुलर है और इसको भी परपेंडिकुलर है. दोनों लाइंस को परपेंडिकुलर होगा. ऐसा वाला जो लाइन है उसका डायरेक्शन रेशियोज मुझे चाहिए. तो लेट अस से दैट लेट L is the required line. L is the required line जिसके डायरेक्शन रेशियोज होंगे A, B एंड C. समझे क्या? अगर इसके डायरेक्शन रेशियो A, B, C है तो इसमें L is perpendicular to L1 and therefore इनका डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0. मतलब A1 प्लस B1 प्लस C1 इज इक्वल टू 0. ओके. So L is the required line. A, B, C are the direction ratios of this line. So L is perpendicular to L1. Therefore, this dot product is 0. Similarly, L is perpendicular to L2 also. Therefore, this dot product, मतलब A2 plus B2 plus C2 is equal to 0. मतलब क्या बनेगा? -2A plus B minus C is equal to 0. और यहाँ से क्या मिलेगा? -3A minus 4B plus C is equal to 0. These are the two equations and three unknowns. Two equations and three unknowns. तो इसके लिए एक स्पेशल मेथड है which is called as Cramer's rule. क्या मेथड है मैं आपको बता देता हूँ. A upon determinant something something is equal to minus B upon determinant something something is equal to C upon determinant something something. तो A upon A को कोएफिशिएंट छोड़ के बाकी जो है उसका लिखते हैं. पहले B1 -1 -4 1 माइनस B अपॉन ये कोएफिशिएंट्स लिखो -2 -1 -3 1 एंड C अपॉन बाकी के कोएफिशिएंट -2 1 -3 -4. सो दिस इज A अपॉन क्या आएगा 1 -4 इज -3 इज इक्वल टू -B अपॉन -2 -3 इज -5 is equal to C upon 8 plus 3 11. So basically ये प्लस हो जाएगा and therefore DRs of required line, therefore direction ratios of required line क्या हो जाएंगे? -3 plus 5 and 8. इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का और एक तरीका है कि भाई ये दो लाइंस है L1 and L2. तो इन दोनों को परपेंडिकुलर होने वाला जो लाइन होगा क्लियरली ये लाइन ऐसा हो एंड दिस इज अलोंग. अगर मैं इसको वेक्टर्स में डिनोट करूँगा U बार एंड V बार, तो दिस इज U बार क्रॉस V बार ऐसे होगा. तो ये जो है इसको मैं U बार बोलूँगा और इसको मैं V बार बोलूँगा. तो व्हाट विल बी U बार इज इक्वल टू -2I plus J minus K and V bar is equal to -3I minus 4G plus K. So what is U bar cross V bar is equal to I, J, K. Are you all there on the line? -2 1 -1 -3 -4 1. So this will be I into something something minus J into something something plus K into something something will be 1 minus 4 is -3 -2 -3 is -5 and 8 plus 3 is 11. So this is -3I plus 5J plus 11K. So what are the direction ratios of line L?
therefore DRs of required line are -3, 5 and 11, which we get the same answer here. तो आप इस तरह से कर सकते हो, or you can solve it by this method also. Check if any doubts are there and please take the screenshot. Okay. क्या दिया है? Prove that the two vectors whose direction cosines are given by AL plus BM plus CN, AL plus BM plus CN is equal to 0 and FML plus GNL plus HLM दो वेक्टर्स जिनका डायरेक्शन कोसाइंस आर गिवन बाय दिस आर परपेंडिकुलर. These two vectors are perpendicular if f upon a plus g upon b, f upon a plus g upon b plus h upon c is equal to 0. Okay. ऐसा है. Prove that the two vectors whose direction cosines are given by this are perpendicular if this is the case. You have to prove this. अब यहाँ पर मैं ये जो पहला इक्वेशन है, this is the first equation and this is the second equation. So I will rewrite the first equation here. M is equal to, मैं इसको लिखना चाहूँगा. I'll write as M is equal to minus AL plus CL upon B. और इस M को मैं इधर सब्स्टिट्यूट करूँगा. What we get here? I'll substitute for M then. So this will give me minus Fn into AL plus CL upon B plus GNL plus HL, ये माइनस हो गया, माइनस AL plus CL upon B is equal to 0. तो यहाँ पर भी B है और यहाँ पर भी B है. So better I'll multiply throughout by B. तो ये क्या बन जाएगा B and open the brackets now. So this will become minus AFNL plus minus FCN square plus GNL minus AHL square minus CHLL is equal to 0. ऐसा और यहाँ पर B भी आएगा, BGNL ऐसा कुछ तो भी आएगा. ठीक है. This expression we get there. Now यहाँ पर since n is not equal to 0, अगर n 0 नहीं है, l भी 0 नहीं होगा, n भी 0 नहीं होगा और m भी 0 नहीं होगा. So I'll divide throughout by n square. n square से divide करेंगे throughout. तो क्या मिलेगा? Divide this by n square, n square, n square, n square and n square. क्या मिलेगा बताइए? यहाँ पर n square का है, यहाँ पर एक n गया, यहाँ पर एक n गया और यहाँ पर एक n गया. So what is this going to give me? Minus AF L by N minus FC plus BG into L upon N minus AH into L upon N का square minus CH is equal to 0. कुछ इस प्रकार का इक्वेशन आता है. ठीक है. वेल मैं इसको रिराइट करूँगा. रिराइट दिस एज और इसको -1 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये बनेगा AH टाइम्स L अपॉन N का स्क्वायर प्लस AF माइनस BG L upon N plus C times F plus H is equal to 0.
इस प्रकार का कुछ इक्वेशन आएगा. दिस इज द इक्वेशन दैट वी गेट. N upon N CH. अच्छा, CH भी L upon N नहीं क्या? CH is L upon N. तो ये L upon N का जो आएगा माइनस BG प्लस CH times L upon N plus FC is equal to 0. This is the quadratic equation in L upon N. ये देखिए quadratic equation आ गया है L upon N के अंदर. ठीक है, तो इसके दो रूट्स होंगे, L1 upon N1 and L2 upon N2. ये दो रूट्स होंगे. Okay, so what will be the product of the roots? Product of the roots alpha into beta is equal to C upon A. C मतलब this and A is this. तो क्या बनेगा? Product of the roots मतलब L1 N1 L1 upon N1 into L2 upon N2 is equal to C upon A. मतलब FC divided by AH. FC upon AH. This is what we get there. Any doubts so far? Any doubts so far? Okay. तो ये मुझे मिल गया प्रोडक्ट ऑफ L1 L2 upon N1 N2 is equal to F upon A H upon C. I'll rewrite this as that is equal to F upon A divided by H upon C. H upon C. This is what we get there. Okay. So मैं L1 L2 upon N1 N2 is equal to this. This is what we get there. So इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ L1 L2 upon ये नीचे आएगा and N1 N2 उधर चला जाएगा is equal to N1 N2 आएगा. So this will become F upon A and this is H upon C. इसी तरह से मैं प्रूव करूंगा सिमिलरली, ऐसा ही बोलना है सिमिलरली L1 L2 and M1 M2. देखो ये F upon A मिल गया and this is H upon C. तो सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर L स्क्वायर से डिवाइड करता हूँ तो मुझे ये एक्सप्रेशन आएगा F upon A and G upon B. समझे? So what we get there ultimately? इस वीडियो में थोड़ा लेंगे करेंगे. इस वीडियो में L1 L2 is equal to M1 M2 is equal to N1 N2, that is equal to F upon A is equal to G upon B is equal to H upon C is equal to constant. समझे? So what is L1 L2 is equal to K times F upon A. What is M1 M2 is equal to K times G upon B, and what is N1 N2 is equal to K times H upon C. And since these two vectors are perpendicular, therefore we'll say since L1 L2 is equal to plus M1 M2 plus N1 N2 is equal to 0, and therefore I'll say here that is F upon A plus A upon B plus H upon C is equal to 0. और यही मुझे प्रूव करना है कि अगर ये परपेंडिकुलर है तो दिस इज द केस एंड देयरफॉर दिस इज द केस. प्लीज चेक दैट दिस इज क्लियर टू यू. हेलो, ऑन द लाइन प्लीज. हेलो. क्वेश्चन नंबर 18. If A is equal to 1 2 3 and B is 4 5 6, are 2 points, then find the foot of the perpendicular from point B to the line joining origin and A. So अगर ये है B and let us say this is O 0 0 0 और ये है A, तो A के coordinates है 1 2 3. I want to find out what are the coordinates of point A, foot of the perpendicular on the line joining O and A. Okay, this is what we want to find out. Now, let us say that let M divides OA in the ratio lambda is to 1. Let M divides OA in the ratio lambda is to 1.
Therefore m is equal to bisection formula. M is equal to lambda into 1 plus 1 into 0 upon lambda plus 1, lambda into 2 plus 1 into 0 upon lambda plus 1, lambda into 3 plus 1 into 0 upon lambda plus 1. Therefore m is equal to lambda upon lambda plus 1, 2 lambda upon lambda plus 1, 3 lambda upon lambda plus 1. I hope this is clear. These are the coordinates of point M. Okay? Hello? Hello? बराबर है क्या? तो m के coordinates मिल गए. Therefore, what are the direction ratios? What are direction ratios of BM? x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z. मतलब क्या हो जाएगा ये? This will become like this coordinate minus this coordinate. So it will be lambda upon lambda plus 1 minus 4. 2 lambda upon lambda plus 1 minus 5. And 3 lambda upon lambda plus 1 minus 6. इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं. तो lambda minus 4 lambda, that is minus 3 lambda minus 4 upon lambda plus 1. इधर आएगा 2 lambda minus 5 lambda, that is minus 3 lambda minus 5 upon lambda plus 1. 3 lambda minus 6 lambda is minus 3 lambda. Okay? Minus 6 upon lambda plus 1. Now these are the direction ratios of BM. And we know that this BM is perpendicular to OA. BM is perpendicular to OA. We already know the direction ratios of BM. These are the direction ratios of BM. अब OA के direction ratios क्या होगा? x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1. तो ये बनाएगा 1, 2, 3. अगर ये perpendicular है तो उसके direction ratios का dot product will be 0. बराबर है क्या? तो ये क्या आएगा? 1 into this minus 3 lambda minus 4 upon lambda plus 1 plus 2 into minus 3 lambda minus 5 upon lambda plus 1 plus 3 into minus 3 lambda minus 6 upon lambda plus 1 is equal to 0. अब lambda plus 1 common or cancel, so this will become minus 3 lambda minus 4 minus 6 lambda minus 10 minus 9 lambda minus 18 is equal to 0. So this will give me 16 lambda 18 lambda is equal to minus 32. So lambda is equal to minus 32 upon 18. 9 are 16. So lambda is equal to minus 16 upon 9. Once I know lambda का value, I can substitute this lambda का value to find out the coordinates of point M. यहाँ पर substitute करेंगे. This will become M is equal to. Are you understanding that? M is equal to क्या आएगा ये? Minus 16 upon 9 divided by minus 16 upon 9 plus 1. क्या आएगा? Minus 16 upon 9 divided by minus 16 plus 9. So that will be 7. Minus 7 upon 9. Okay? उसी तरह से यहाँ पर होगा 2 times. So this will become, और ये होगा 3 times. Okay? This gets cancelled. So this is actually 16 upon 7. 2 times 32 upon 7. 3 times 48 upon 7. These are the coordinates of the foot of the perpendicular. Please check. क्योंकि ये जो है, this is lambda upon lambda plus 1, 2 times lambda upon lambda plus 1, 3 times lambda upon lambda plus 1. तो ये 2 times this value और ये 3 times this value ऐसे होगा. तो वो मैंने डायरेक्ट लिख दिया. Is this okay? Please check whether this is clear to you. Hello. The next thing that we go for, the next topic, scalar triple product, or it is also called as, sometimes also called as box product. Okay? So if A bar is equal to A1i plus A2j plus A3k, B bar is equal to B1i
plus B2J plus B3K and C bar is equal to C1I plus C2J plus C3K. Then the box product, scalar triple product. स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का मतलब होता है बी बार क्रॉस सी बार, जो भी कुछ आएगा डॉटेड विद ए बार, ठीक है. दैट इज डिनोटेड बाय बॉक्स ए बार बी बार सी बार एंड दैट इज इक्वल टू A1 A2 A3 B1 B2 B3 and C1 C2 C3. Okay, this is the formula for that. Is that clear? This is also called as box product. ये पहला formula है उसका. Then there are certain properties of the box product. कि पहला property box A bar B bar C bar, इसको मैं साइक्लिकली चेंज कर सकता हूँ. साइक्लिक चेंजेस आर परमिटेड. मतलब A इधर जाएगा, B इधर आएगा और C इधर आएगा. दिस इज B बार C बार A बार. और एक बार साइक्लिक चेंज करो, B इधर जाएगा, C इधर आएगा और A इधर आएगा. सो दैट इज नथिंग बट C बार A बार B बार. So for cyclic changes, the box product remains same. For non-cyclic, this is called a cyclic change. Cyclic change. For non-cyclic change, the box product A bar B bar C bar. If I interchange any two rows, non-cyclic. तो वो माइनस हो गया, माइनस बी बार ए बार सी बार, या फिर इन दोनों को अगर चेंज किया, इसे माइनस ए बार सी बार बी बार. सो फॉर नॉन साइक्लिक चेंज उसका साइन चेंज हो जाता है. इज दिस ओके? प्लीज चेक वेदर दिस इज क्लियर टू यू. ठीक है. और द नेक्स्ट इज थर्ड कि इंटरचेंज ऑफ डॉट एंड क्रॉस does not affect that. मतलब A bar dot A bar cross C bar is equal to A bar cross B bar dot C bar. You can interchange the dot and cross, keeping the same order. Really doesn't matter. ये same ही रहेगा. Okay. So if we interchange the dot and cross, this actually explains the commutative law. Okay. So these are some of the properties. और एक प्रॉपर्टी जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि डॉट प्रोडक्ट बॉक्स प्रोडक्ट जीरो कब होता है. बॉक्स प्रोडक्ट इज जीरो. बॉक्स प्रोडक्ट ए बार बी बार सी बार इज इक्वल टू जीरो इफ नंबर वन एनी ऑफ वेक्टर्स इज इक्वल टू जीरो. एनी ऑफ वेक्टर इज अ जीरो वेक्टर. दूसरा एनी टू वेक्टर्स आर कोलिनियर. और तीसरा ऑल द थ्री वेक्टर्स आर कोप्लेनर. इन एनी ऑफ दिस केसेस ये जीरो बनेगा. इज दैट क्लियर? ऑलराइट. और एक चौथा बताना चाहूंगा दैट विल बिकम द एनी टू वेक्टर्स आर कोलिनियर. मतलब यहाँ पर अगर मैं सी बार की जगह पर ए बार लूंगा तो ए बार एंड ए बार दे विल बिकम कोप्लेनर, कोलिनियर वेक्टर्स. कोलिनियर का मतलब होता है पैरेलल वेक्टर्स या एंटी पैरेलल वेक्टर्स. कोलिनियर मतलब एक वेक्टर्स की जो बात होती है तो कोलिनियर वेक्टर्स मतलब पैरेलल या एंटी पैरेलल वेक्टर्स. सो दिस इज द केस. दीज आर द थ्री केसेस व्हेन द बॉक्स प्रोडक्ट इज इक्वल टू जीरो. चेक इफ एनी डाउट्स आर देयर सो फार. या ए बार बी बार सी बार, these are the vectors which are forming the coterminal edges, that is adjacent edges of the parallelepiped, and I have to prove that the volume of this parallelepiped, is equal to box product of A bar B bar C bar. ये मुझे प्रूव करना है. that is the theorem. Now before I go for this, just tell me one thing कि if this is A bar, this is A bar and this is P bar, ये P bar है, P bar तो and this is the angle between them. तो अगर मुझे इसका प्रोजेक्शन चाहिए, प्रोजेक्शन ऑफ A bar on P bar, ये रहा प्रोजेक्शन. So what is the formula for projection?
उसको स्केलर प्रोजेक्शन भी कहते हैं ऑफ ए बार ऑन पी बार। इसके लिए फॉर्मूला हमने देखा है ऑलरेडी स्केलर प्रोडक्ट के दौरान, इट इज ए बार डॉट पी बार अपॉन पी, ऐसा देखते हैं ए बार डॉट पी बार अपॉन पी। तो उसी तरह से अगर मुझे ए बार का प्रोजेक्शन चाहिए, ए बार का प्रोजेक्शन, ए बार इज दिस वेक्टर, ये जो है दिस इज ओ ए इज ए बार, ओ बी इज बी बार एंड ओ सी इज सी बार। ठीक है, तो मुझे ए बार का प्रोजेक्शन अगर चाहिए यहाँ पे along दिस, वो ए बार का प्रोजेक्शन होगा ये, दिस इज ग्रीन वाला जो मैंने अभी दिखाया है। सो दिस इज द प्रोजेक्शन और स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार क्रॉस सी बार। यहाँ पर ऑन पी बार था एंड दैट इज गिवन बाय ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार अपॉन मॉड्यूलस ऑफ बी बार क्रॉस सी बार। ये होगा। Any doubts about this? Please check whether this is clear to you all. This is the scalar projection of A bar on B bar, and eventually that becomes the height of the parallelepiped. That is nothing but the height of parallelepiped. ठीक है। अब मैं वॉल्यूम की बात करूंगा। अच्छा, at the same time here, what is the base area? Base area is a parallelogram. Base area, which is, so what is the area of that parallelogram? The area of this parallelogram is nothing but modulus of b bar plus c bar। ठीक है, यहाँ पर मैंने उसका हाइट फाइंड आउट किया और बेस एरिया फाइंड आउट किया। ओके, नाउ व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललेपिपेड? वॉल्यूम ऑफ पैरेललेपिपेड इज गिवन बाय, बोलिए, इट इज इक्वल टू बेस एरिया into height. Now the base area is modulus of b bar plus c bar, and the height is this, which is nothing but a bar dot b bar cross c bar upon modulus of b bar plus c bar. Well, this gets cancelled, and therefore the volume of the parallelepiped is a bar dot b bar plus c bar, which is nothing but the box product a bar b bar c bar। यही अपने को प्रूव करना था। प्लीज चेक whether this is clear to you। ये थियरम है, डेरिवेशन है, पूछा जाएगा एक बोर्ड एग्जाम में। प्लीज चेक दैट। बाकी आपको याद रखना है ये थियरम, इज दिस ओके, या फॉर्मूला। जस्ट लाइक द पैरेललेपिपेड, now we consider the volume of this tetrahedron। OA BC is the tetrahedron where OA OB and OC they are forming the coterminous edges, and the vectors a bar b bar and c bar they are acting along these coterminal edges OA OB and OC। ठीक है, यहाँ पर इसका हाइट क्या होगा रे? हाइट, if I say that this is, अगर ये a बार है, देखिए यहाँ पे अगर ये है वेक्टर a बार, this is vector a bar, and if I consider here the cross product of b bar and c bar, the cross product of b bar and c bar will be perpendicular like this, so this is the cross product of b bar and c bar। Let me call this as b bar plus c bar। और अब मैं ए बार को वहां पर प्रोजेक्ट करूंगा, प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन दिस। तो वो जो प्रोजेक्शन होगा वो कुछ इस प्रकार होगा, ग्रीन कलर से मैंने दिखाया इस वक्त। दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार प्लस सी बार। प्रोजेक्शन और स्केलर प्रोजेक्शन आई राइट विद द ग्रीन ब्लैक इंक। स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ ए बार on b bar plus c bar is given by this, that means this वैसे आएगा वो, it is equal to a bar dot b bar plus c bar upon modulus of b bar plus c bar। ठीक है, ये हो गया प्रोजेक्शन, मतलब उसका हाइट है ये, that is the height of this tetrahedron। So eventually this happens to be the height of tetrahedron, okay। And what about the base area? Well, this is OBC is the base triangle, so area of this base is half modulus of b bar plus c bar, okay। So area of the base or base area is equal to half modulus of b bar plus c bar।
Now the volume of tetrahedron is given by the volume of tetrahedron is given by 1/3 into base area into height. 1/3 into 1/2 modulus of b bar cross c bar into a bar dot b bar cross c bar upon modulus of b bar cross c bar. Well, in this case, modulus of b bar cross c bar gets cancelled, so this is 1/6 a bar dot b bar cross c bar, that is equal to 1/6 box product of a bar, b bar and c bar. Well, that is the answer. Please check whether both these theorems are clear to you, and please take the screenshot. The vector triple product of three vectors a bar, b bar, c bar is given by a bar cross b bar cross c bar is equal to a bar dot c bar into b bar minus a bar dot b bar into c bar. ये फॉर्मूला है, एक्सेप्ट इट एज इट इज, देयर इज नो प्रूफ और समथिंग लाइक दैट. ठीक है. So exercise 5.5, HSC book page 183. This exercise is based on STP and BTP, scalar triple product and vector triple product. Let's begin with question number 2. If the vectors, क्या vectors बताएगा? 3i plus 5k, 3i plus 5k, 4i plus 2j minus 3k, 4i plus 2j minus 3k. 3i plus j plus 4k are to be the coterminous edges of the parallelepiped. Find the volume of this parallelepiped. So let me call this as a bar, this is b bar, and this is c bar, and the volume of the parallelepiped is given by box product of a bar, b bar and c bar. Let's calculate. That is equal to, what is the box product? क्या आएगा ये? So be a bar 0 by 305, यहाँ पर I नहीं है ना, 4 2 minus 3 3 1 4, that is 3 into something something minus 0 plus 5 into something something, 3 into 8 plus 3 11, 5 into 4 minus 6 is minus 2, 33 minus 10. So this volume of the parallelepiped is 23 cubic units. 23 cubic units. Is this clear to you all? Question number 3. Question number 3. If the vectors minus 3i plus 4j minus 2k, I plus 2k and I minus pk are coplanar, find the value of k. Now in vectors को मैं बोलूँगा a bar, b bar and c bar, and these three vectors they are coplanar. अगर coplanar है तो इनका box product 0 आता है. Three vectors coplanar, box product is 0. Therefore box product of a bar, b bar and c bar is equal to 0. तो कर लीजिएगा box product इसका find out now. So this is determinant minus 3 4 minus 2 b bar 1 0 2 and c bar 1 0 minus b is equal to 0. Is this clear? Now let us calculate this. So this will give me minus 3 into something something, minus 4 into something something, minus 2 into something something is equal to 0. So that will give me 0 minus 0 is 0, minus 4 into minus p minus 2, minus p minus 2, and minus 2 into 0 minus 0, 0. So basically this is 4 भी जाएगा वहाँ पे तो 0 हो जाएगा. Minus p minus 2 is equal to 0 and p is equal to minus 2 is the answer. Please check whether this is clear to you. Question number 4 now. Any doubts so far? Is this clear to you all? Hello?
या 4 में का 1. Question number 4 sub part 1. Prove that the box product of printing stake. कुछ समझ में आ रहा है कि वो कैसे ग्रुपिंग है? ग्रुपिंग कैसा है? The grouping is A bar, B bar plus C bar, A bar plus B bar plus C bar. ऐसा ग्रुपिंग है. A bar, B bar plus C bar, A bar plus B bar plus C bar. समझे? ये 0 है. ठीक है? Well, let's open that now. इसका मतलब है A bar dot B bar plus C bar cross A bar plus B bar plus C bar. ऐसा होगा. अब मुझे इस ब्रैकेट को ओपन करना पड़ेगा अंदर. नाउ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर, मतलब अगर रिपीटेशन होता है वहां पे क्रॉस प्रोडक्ट में. So when I open this will become A bar dot, क्या आएगा ये? This will become B bar cross A bar. लेकिन ये B bar cross B bar 0 हो जाएगा and B bar cross C bar बचेगा. Similarly C bar cross A bar, C bar cross B bar and C bar cross C bar 0 हो जाएगा. तो क्या बचेगा यहाँ पर? B bar cross A bar. ठीक है? दूसरा 0 आएगा प्लस B bar cross C bar. Now this is C bar cross A bar. And this is C bar cross B bar, C bar cross B bar, and C bar cross C bar is 0. Now here we see that B bar cross C bar and C bar cross B bar, they are actually opposite vectors. So मैं इसके जगह पर अगर minus B bar cross C bar लिखूंगा तो बात एक ही है, and this gets cancelled. ठीक है? Now that is nothing but, अब जब ये open करेगा bracket, जब open करोगे, so whenever a vector is repeated, the box product is 0. वायर कौन सा नहीं शांत करो. So this is A bar, so this becomes 0 और यहाँ पर भी A bar repeat हो रहा है, मतलब A bar dot B bar cross A bar plus C bar cross A bar. So when I open this bracket, ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 होगा. Why? Because A is repeated here and therefore this is equal to 0 and that is equal to RHS. Please check whether this is clear to you all. Hello? So question number 4, we have to prove that this is equal to this. So I will start with the LHS here. LHS is prove करेंगे. पहले मैं ये अंदर का जो बॉक्स है इसको ये क्रॉस प्रोडक्ट है इसको ओपन करूँगा. So this will be as it is. This is A bar plus 2B bar minus C bar is dotted with. अब देखिए जब ये A bar क्रॉस होगा इसके साथ तो ये 0 बनेगा. ये नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा. This is also not 0 but this will be 0. और ये भी बचेगा. तो देखते क्या आएगा. A bar cross A bar मैं लिखूंगा ही नहीं. So this is minus A bar cross B bar. Would you like to answer? Minus A bar cross C bar minus B bar cross A bar. Okay? Plus B bar cross C bar. ठीक है? 1, 2, 3. Alright, that's fine. अब इसे मैं सीधा कर लेता हूँ. So ये अगर मैं इसको ऑर्डर चेंज कर लूँ तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. So this will become plus A bar plus B bar और वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा. तो दिस इज गॉन. तो अब क्या बचेगा देखते हैं. दैट इज इक्वल टू A bar plus 2B bar minus C bar is dotted with minus A bar plus C bar plus B bar plus C bar. अब ये एक एक करके जाएंगे. A bar जब इसको बॉक्स प्रोडक्ट लेगा तो यहाँ पर A bar रिपीट हो रहा है तो ये 0 हो गया. A bar इसके साथ बॉक्स प्रोडक्ट लेगा तो वो बचेगा. दैट इज व्हाट A bar dot B bar cross C bar. अब B bar इसके साथ जाएगा तो कोई नहीं -2 times B bar dot A bar cross C bar और ये इधर चला जाएगा तो वहां पर B bar है रिपीटेड 0 आएगा.
C bar repeated here 0 and C bar repeated here 0. Now this is box ABC. This is box ABC and this is minus 2 times box BAC. Now I'll go for this non-cyclic change. अगर ये non-cyclic change करेंगे, that is A bar, B bar and C bar, तो इसका साइन चेंज होगा और ये माइनस का प्लस बन जाएगा और ये एज इट इज A bar, B bar, C bar box. So that is equal to 3 times box ABC and that is equal to RHS. Please check whether any doubts are there. Hello. Question number 5. If C bar is equal to 3A bar minus 2B bar, prove that box ABC is equal to 0. Prove that box ABC is equal to 0. तो कोई नहीं, now consider here box ABC. That is nothing but A bar dot B bar cross C bar. That is equal to A bar dot B bar cross C bar की जगह पर आएगा ये 3A bar minus 2B bar. Okay. Now that will become A bar dot, this is 3 times B bar cross A bar minus 2 times B bar cross B bar. Self cross product is already 0. और जब ये डॉट प्रोडक्ट लूंगा तो ये A bar रिपीट हो रहा है तो ये डॉट प्रोडक्ट भी 0 and therefore it is equal to 0 and that is equal to RHS. I hope this is clear to you. Please check whether it is clear. Take the screenshot please. Question number 6. U bar is given, R bar is given, W bar is given and you have to find out this box product. Now to go for this box product, I will call this as A bar, I'll call this as B bar, I'll call this as C bar. So पहले मैं ये A bar, B bar, C bar find out करूँगा. So what is A bar is equal to? A bar is equal to U bar plus W bar. Add these two. So this will become I minus 2J plus J is minus J plus K minus K is 0. मुझे चाहिए B bar which is equal to U bar cross R bar, that is equal to I J K. U bar 1 minus 2 1 and R bar 3 0 1. So this is equal to I into something something minus J into something something plus K into something something. This is minus 2 minus J into 1 minus 3 is minus 2 and K into 0 minus 6 minus 6 plus 6. So B bar is equal to minus 2I plus 2J plus 6K and C bar is equal to R bar cross W bar, that is equal to I J K R bar 3 0 1 and W bar 0 1 minus 1. So this is I into something something minus J into something something plus K into something something. I into 0 minus 1 is minus 1, minus 3 and 3. So C bar is equal to minus I plus 3J plus 3K. This is what we get for A bar, B bar, C bar. अब मुझे इसका box product चाहिए. So the required product is box ABC. And box ABC is equal to A bar 1 minus 1 0. B bar minus 2 2 6, C bar minus 1 3 3. That is equal to 1 into something something minus minus plus 1 into something something plus 0. 6 minus 18 is minus 12. Minus 6 plus 6 is 0 and therefore this is equal to minus 12. So the required box product is equal to minus 12. कितनी बार आएगा? Question number 8. This is the question based on the vector triple product. If A bar is equal to I minus 2J, B bar is equal to
3i plus 2j, and c bar is equal to 2i plus j plus 3. Verify that a bar cross b bar cross c bar is equal to a bar dot c bar, farthest product into b bar, minus nearest product a bar dot b bar into c bar. ये मुझे वेरीफाई करना है. I have to verify this. Okay, so let us start with that now. इसमें the first thing that we do is I will find out b bar cross c bar. So what is b bar cross c bar is equal to I j k. Okay, b bar 3 2 0, c bar 2 1 3. So that is I into something something minus j into something something plus k into something something. 3 2 is 6, 3 3 is 9, 3 minus 4 is minus 1. So this is 6i minus 9j plus k. This is b bar cross c bar. Then I'll go for the left hand side, which is a bar cross b bar cross c bar. Again a bar का और इसका क्रॉस प्रोडक्ट, that is equal to I j k. A bar is 1 minus 2 0. B bar plus C bar is 6 minus 9 minus 1. So this is I into something something minus j into something something plus k into something something. So it is 2. This is minus 1 and minus 9 plus 12 is 3. So LHS is equal to 2i plus j plus 3k, equation 1. Okay, this is the LHS. Now I'll go for the RHS. RHS के लिए मुझे पहले ये प्रोडक्ट फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिर ये डॉट प्रोडक्ट. So first of all I'll find out a bar dot c bar, then I'll find out a bar dot b bar. Okay, so a bar dot c bar क्या आएगा? ये 1 into 2 minus 2 into 1 plus 0 into 3, 0 k है, that is equal to 2 minus 2 gone and this is 0. अब a bar dot b bar लेते हैं. So this is 1 into 3 minus 2 into 2 plus 0 into 0. So this is 3 minus 4, that is minus 1. Now I'll write what is RHS. So RHS is a bar dot c bar into b bar minus a bar dot b bar into c bar. A bar dot c bar is 0 minus a bar dot b bar is minus 1 times c bar, that is equal to c bar. So what is c bar? C bar is equal to 2i plus j plus 3k. This is the RHS. I'll call this as equation 2. If I look at 1 and 2, from 1 and 2, LHS is equal to RHS. From 1 and 2, LHS is equal to RHS. Please check whether this is clear. Question number 9. A bar, B bar, C bar, all three are given. Well, we have to find out the first is A bar cross B bar cross C bar. And secondly, A bar cross B bar cross C bar. ऐसे. और पूछ रहे कि are the results same? So let us do this one by one. Let us do this one by one. So first of all, I'll find out B bar cross C bar. So what is B bar cross C bar? I j k. B bar is 1 2 0. C bar 2 1 minus 2. Okay, that is equal to I into minus j into plus k into. So I into minus 4. J into minus 2 minus and 0, k into 1 minus 4 is minus 3. So this is minus 4i plus 2j minus 3k. Therefore what is A bar cross B bar plus C bar is equal to, once again, ijk A bar. A bar is 1 minus 2 0. Okay, and B bar plus C bar minus 4 2 minus 3.
So that is equal to I into something something minus j into something something plus k into something something. Okay, that is equal to minus 6 minus 3 and 2 minus 8 is minus 6. So this is 6i plus 3j minus 6k. This is the first part. Please check whether any doubts are there. 6i plus 3j minus 6k. अच्छा, इसको सॉल्व करने का और एक तरीका है, वो जो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला है ना, उससे भी कर सकते हैं. तो सेकंड वाला प्रॉब्लम मैं उस तरीके से करूँगा. ए बार क्रॉस बी बार क्रॉस सी बार इज फारदेस्ट प्रोडक्ट ए बार और सी बार इंटू बी बार माइनस नियरेस्ट प्रोडक्ट, दैट इज बी बार और सी बार इंटू ए बार. देखो, फारदेस्ट प्रोडक्ट जब लेता हूँ तो डॉट प्रोडक्ट में उल्टा पुल्टा चलता है, वेदर यू कॉल इट एज सी बार डॉट ए बार या ए बार डॉट सी बार चलेगा. नियरेस्ट प्रोडक्ट मतलब बी बार डॉट सी बार होना है, सी बार डॉट बी बार. So I can find it out by using this method also, by using this formula. So in this case, first of all, I'll find out what is a bar dot c bar. So what is a bar dot c bar is equal to, this is a bar or c bar. तो ये बनेगा 1 into 2 minus 2 into 1 plus 0 into minus 2. So that will give me 2 minus 2 is equal to 0. And now b bar dot c bar. B bar dot c bar is equal to b bar is 1 into 2 plus 2 into 1 plus 0 into minus 2. This is 1. So 2 plus 2, 4. And therefore, if I substitute here, this will become 0 into b bar minus 4 into a bar. So this is 1. So this is minus 4 into a bar. A bar is I minus 2j. So that will become minus 4i plus 8j. Well, that is the answer, the second question. Minus 4i plus 8j. You can find it out by any method. Is that clear? Please check whether this is clear.